We have hugely diverse linguistic scenario in our country. We have launched some of these models during this summit, and these models have stood their ground against frontier models on the points that matter most to us. The third layer is the compute layer, and here, once again, our Prime Minister's vision of democratizing technology is clearly visible. We treat compute as a public good, and that's why in a public-private partnership, we have created a common compute platform where we are providing access to 38,000 GPUs at a very affordable rate for our startups, academia, researchers, and students. And we will be adding another 20,000 GPUs to this common compute platform. The fourth layer is the infra layer, with our talent pool and very trusted policies. And recently our Honorable Prime Minister has announced during the budget a very big policy shift towards getting the world's data to India, to reside in India, to be processed here, and to deliver high-value services to the entire world. We expect large investments in data centers in the coming months. The fifth layer is the energy layer. Friends, it's the commitment towards clean energy that our Honorable Prime Minister has always shown, and that's why in our country today, more than 50% of the power generation capacity is from the clean sources, from renewable sources. Our visionary Prime Minister has recently reformed the nuclear energy sector also, which is another very good sector for providing that base load of clean energy. We have a robust grid which has been practically rebuilt over the last 1 decade. In this context window, this is the context window in which we are building our AI ecosystem. Stanford University AI Index places India among the leading countries in AI adoption, AI talent, and AI diffusion. But we are also conscious of the challenges which are facing our IT industry. And to mitigate it, we are working with the industry and academia to upskill, reskill, and to build a new talent pipeline for this new intelligence age. While we harness the benefits of AI, we must also find collective solutions for mitigating the risks. By placing human safety and dignity at the heart of AI, we can move forward with conviction. Together, through this summit, and through all the collective efforts and through the vision of our Honorable Prime Minister, let us shape an AI future of the humans, by the humans, and for the humans. Thank you very much. Thank you, Honorable Minister, for the welcome remarks. And before I move on, ladies and gentlemen, I would like you to welcome our distinguished guests. We have with us His Excellency Emmanuel Macron, the Honorable President of France, who's joined us now. Please welcome him. The previous host of AI Summit was France, and it's indeed our privilege to welcome you here again this morning, President Emmanuel Macron. Ladies and gentlemen, now I would like to welcome Shri N. Chandrasekaran, Chairman of the Tata Group, to the dais to share his visionary insights on artificial intelligence. Please welcome Shri N. Chandrasekaran, Chairman, Tata Group. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Your Excellencies, Heads of State, policymakers, and distinguished ladies and gentlemen. It is an extraordinary privilege to be here this morning and participate in this AI Summit. India is a nation of AI optimists. Our enthusiasm is not surprising. Indians have witnessed the hugely ambitious digital infrastructure programs and what they can achieve. The largest digital identity system in the world, covering 1.4 billion people. A digital payment interface that accounts for
half of the entire world's transactions. Over the past few years, under our Honorable Prime Minister's vision, India has treated AI as a strategic national capability, aligning the full stack from chips to systems to energy and to applications through Semicon India, an India AI mission, and most importantly, the recent reforms such as the Shanti Act for clean energy. We are building AI at scale with trust, resilience, and long-term competitiveness. AI is a foundational technology that cuts across all industries. AI is nothing artificial, it is real, because it learns from data and learns faster every day, and it is not based on any fixed rules. Third, AI can scale, and it scales pretty rapidly. Putting all this together, AI, to my mind, is the next big infrastructure. It is the infrastructure of intelligence. It will have a very profound impact, exactly the same way in the past other infrastructure changes have done, steam engines, electricity, or internet. Our mission should be to make AI work for every individual and every citizen in this country. We should put the AI tools in the hands of the lost person in the country and in fact on the earth. And that's the vision that we should all work towards. A couple of days ago, we witnessed 1,500 rural women here in Bharat Mandapam who had no background to computing, no background to digital tools. In a matter of few hours, could learn AI, could build products, could build marketing materials, campaigns, all in front of a global audience, and they did it in 4 hours. AI will have huge impact on our public services delivery. It will have huge impact on enterprises around the world. Since I come from the background of IT industry, one word for the IT industry. It is, in my opinion, the biggest opportunity for the tech sector and the IT industry, because the IT industry's real value is the context, an understanding of every enterprise's business and technology landscape, and make the right technology work inside the processes and the ecosystem, the supplier, customer, and all the other connections an enterprise has. AI will expand that role much further. It is the opportunity to integrate AI and AI agents into workflows, reimagine processes, and make it work, and carry out the transformation so that every enterprise can realize the moat and realize its vision. Now I want to talk a little bit about the Tata Group. At the Tata Group, we are adopting AI across the stack, from silicon to systems to AI-ready data centers to applications and AI agents. And we believe such a vision and such a journey is going to be extremely exciting, and it will require us to work with world-leading partners in India and across the globe. I would like to make 5 points. The Tata Group is establishing India's first large-scale AI-optimized data center, purpose-built for the next generation AI training and inference. I'm very happy to announce that we have partnered with OpenAI to build the first 100 megawatt capacity, which will scale to 1 gigawatt. And we made an announcement with AMD yesterday, where we will combine the world-class AI rack architecture with Tata's strength in infrastructure, engineering, power,
and solution capabilities to create a sustainable high-density AI capacity in India for global standards. The third, we are already building an AI data insights platform. Minister Ashwini articulated the layers of data architectures. What we are building is totally based on diverse Indian data assets on top of the foundational models. So intelligence becomes available across the diversity of Indian contexts. And the fourth, TCS and our other company, Tata Communications, together, we are building an AI operating system for industries. What we will do is to build agentic industry solutions for every industry. We are already well on that journey, and we will work with partners to be able to launch it and take it to all enterprises around the globe. And finally, again, I want to thank the vision of our Prime Minister. तो दुनिया के अब तक के सबसे बड़े एआई समिट से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे इसी खबर के साथ। पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स, तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर। पतंजलि हनी 100 में 100। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का 14वां दिन मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों पर होगी चर्चा। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह देंगे चर्चा का जवाब। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर विधानसभा में हुआ हंगामा। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर छात्रों को भड़काने के लगाए आरोप। विक्रम सिंह रंधावा ने पलटवार करते हुए दोहराई जम्मू में यूनिवर्सिटी बनाने की मांग। कटरा में प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट के विरोध में हुआ जोरदार प्रदर्शन। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के आह्वान पर स्थानीय कारोबारियों और घोड़ा पिट्ठू वालों ने परियोजना के खिलाफ की नारेबाजी। रमजान का पाक महीना शुरू। आज रमजान का पहला रोजा। बाजार में दिखी रौनक। खजूर के साथ जरूरी सामान खरीदते नजर आए लोग। नॉर्थ के साउथ इंडिया को बेहतर बताने वाले एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह के बयान पर गरमाई सियासत। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने फारूक अब्दुल्लाह का किया समर्थन। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने समर्थन में कहा कि फारूक अब्दुल्लाह ने अपने अनुभव के हिसाब से सच बात बोली। जम्मू कश्मीर में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने फारूक अब्दुल्लाह के बयान पर किया हमला। कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह ने जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया। स्टेटहुड को लेकर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता स्टेटहुड की मांग कर रही है। और चलिए अब ब्रेक के बाद आपको सीधे लिए चलते हैं विश्व के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में जो दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। Indian builders and enterprises and the energy to build together here is palpable, unlike anywhere else. This is the 4th AI summit we've held since the tradition was initiated at Bletchley Park back in 2023, which I still remember. And in those 2.5 years, the advances in the technology have been absolutely staggering. Along with those, the advances in the commercial applications and the societal and ethical questions around the technology have only grown more urgent. My fundamental view is that AI has been on an exponential for the last 10 years, and as part of a sort of Moore's law for intelligence, and that we are now well advanced on that curve, and there are only a small number of years for AI models surpassing the cognitive capabilities of most humans for most things. We're increasingly close to what I've called a country of geniuses in a data center, a set of AI agents that are more capable than most humans at most things and can coordinate at superhuman speed. That level of capability is something the world has never seen before and brings a very wide range of both opportunities and concerns for humanity. On the positive side, we have the potential to cure diseases that have been incurable for thousands of years, to radically improve human health, and to lift
billions out of poverty, including in the global south, and create a better world for everyone. On the side of risks, I'm concerned about the autonomous behavior of AI models, their potential for misuse by individuals and governments, and their potential for economic displacement. India has an absolutely central role to play in these questions and challenges, both on the side of the opportunities and on the side of the risks. As a sign of our commitment, we just this week opened an office in Bengaluru and hired Irina Ghosh, who has spent तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एआई इंपैक्ट समिट का उद्घाटन करने जा रहे हैं और उससे ठीक पहले यहां पर विश्व के जाने माने कंपनियों के प्रतिनिधि और कई देशों के यहां पर प्रतिनिधिमंडल मौजूद है और उनकी मौजूदगी में विश्व का ये सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट भारत में आयोजित किया जा रहा है। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है, लेकिन इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। लॉन्जिविटी, इम्यूनिटी और एंटी एजिंग के लिए आंवले से बढ़कर के कुछ भी नहीं आए। आंखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, ये लंग के लिए, हार्ट, लीवर, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए, हड्डियों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, विटामिन सी के लिए आंवले का च्यवनप्राश हमने बना दिया। हमने महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने, धन्वंतरी ने बताया, ओरिजिनल च्यवनप्राश बना करके सारे देश को उपलब्ध कराया। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का 14वां दिन मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का 14वां दिन मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों पर होगी चर्चा। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला देंगे चर्चा का जवाब। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर विधानसभा में हुआ हंगामा। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर छात्रों को भड़काने के लगाए आरोप। विक्रम सिंह रंधावा ने पलटवार करते हुए दोहराई जम्मू में यूनिवर्सिटी बनाने की मांग। कटरा में प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट के विरोध में हुआ जोरदार प्रदर्शन। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के आह्वान पर स्थानीय कारोबारियों और घोड़ा पिट्ठू वालों ने परियोजना के खिलाफ की नारेबाजी। रमजान का पाक महीना शुरू। आज रमजान का पहला रोजा। बाजार में दिखी रौनक। खजूर के साथ जरूरी सामान खरीदते नजर आए लोग। नॉर्थ के साउथ इंडिया को बेहतर बताने वाले एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर गरमाई सियासत। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने फारूक अब्दुल्ला का किया समर्थन। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने समर्थन में कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने अपने अनुभव के हिसाब से सच बात बोली। जम्मू कश्मीर में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर किया हमला। कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया। स्टेटहुड को लेकर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता स्टेटहुड की मांग कर रही है। एचडीएफसी बैंक धोखाधड़ी मामले में कश्मीर आर्थिक अपराध शाखा ने की बड़ी कार्रवाई। 5 कर्मचारियों को किया गया गिरफ्तार। की शाखा में धोखाधड़ी की शिकायत के बाद एक्शन। गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों में 2 बैंक मैनेजर और 3 कर्मचारी शामिल। पाकिस्तानी हॉकी टीम की फिर एक बार हुई इंटरनेशनल बेइज्जती। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बर्तन मांजकर खेलना उतरना पड़ा। कोच की सफाई। अगर कौम के लिए खेलना है तो फिर थोड़ा बहुत चीजों को लेकर चलना पड़ता है। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने लगातार जीता चौथा मैच। नीदरलैंड्स को 17 रनों से हराया। शिवम दुबे की दमदार 50। वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट झटके। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का 14वां दिन मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों पर होगी चर्चा। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला देंगे चर्चा का जवाब। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर विधानसभा में हुआ हंगामा। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर छात्रों को भड़काने के लगाए आरोप। विक्रम सिंह रंधावा ने पलटवार करते हुए दोहराई जम्मू में यूनिवर्सिटी बनाने की मांग। कटरा में प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट के विरोध में हुआ जोरदार प्रदर्शन। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के आह्वान पर स्थानीय कारोबारियों और घोड़ा पिट्ठू वालों ने परियोजना के खिलाफ की नारेबाजी। रमजान का पाक महीना शुरू। आज रमजान का पहला रोजा। बाजार में दिखी रौनक। खजूर के साथ जरूरी सामान खरीदते नजर आए लोग। नॉर्थ हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन में दुनिया के 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 45 देशों के मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि और शीर्ष उद्योग नेता हो रहे हैं शामिल। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का 14वां दिन, मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों पर होगी चर्चा। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला देंगे चर्चा का जवाब। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर विधानसभा में हुआ हंगामा। डिप्टी सीएम सुंदर चौधरी ने बीजेपी पर छात्रों को भड़काने के लगाए आरोप। विक्रम रंधावा ने पलटवार करते हुए दोहराई जम्मू में यूनिवर्सिटी बनाने की मांग। कटरा में प्रस्तावित रोपवे परियोजना के विरोध में हुआ जोरदार प्रदर्शन। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के आह्वान पर स्थानीय कारोबारियों और घोड़ा पिट्ठू वालों ने परियोजना के खिलाफ की नारेबाजी। कटरा रोपवे विवाद पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, कटरा के डेवलपमेंट से किसी की नहीं जाएगी रोजी रोटी।